ये जो affective domain है, this is we can say that the part of that system which was actually published in 1965. और ये जो affective domain है, it's just go parallel with all the other two domains, which is the psychomotor domain as well as the cognitive domain. The affective domain that actually describe the learning objectives that emphasize a feeling tone, an emotion, or a degree of acceptance or rejection. All these learning objectives of the affective domain, they vary from very simple attention to the selected uh, target as towards the most complex, which is the characterizing, yeah, which we can call as the uh, characterization. There are different subdomain of the affective domain as well, like we can receiving, attending, responding, wailing, organizing, and characterizing. What we mean by receiving and attending, that simple mean that the person that should have to be aware to a situation, and he should be aware of how we have to be there, what are the ethics of that place. जिस तरह सपोज एक आप एक मस्जिद में चले जाते हैं, वहां पर इबादत करते हैं, हम वहां पर नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज अपनी जगह पर है, लेकिन वहां के कुछ रूल्स, कुछ वहां की कुछ ऐसे बातें जिनका हमें बहुत एहतियात करना चाहिए। हमने वहां पर मोबाइल यूज नहीं करना है, वहां पर हमने बातें नहीं करनी है, वहां पर हमने सीधी कब्र की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए, वहां पर हमने जो है जिक्र करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे हैं जो पहले से हमें पता होनी चाहिए कि वी शुड हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट प्लेस। अब इसकी बजाय अगर हम अपने दोस्तों के साथ जो है वहां पर किसी बाहर रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो वहां पर हमारी जो डोइंग्स है, वहां पर हमारी जो फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, वो हमारी कुछ और किस्म की होंगी। सो दैट इज एक्चुअली कि एक सेंस होनी चाहिए कि व्हेन वी आर अटेंडिंग द डिफरेंट प्लेसेस, सो वी शुड हैव द एथिक्स, वी शुड हैव इन माइंड दैट हाउ वी हैव टू डील विद दिस सिचुएशन। जो करना होगा, जैसे करना हो तो एक अलग बात है, लेकिन हमारी वहां पर अपनी एज अ पर्सनली जो है हमें किस तरह जो है एक रहना है, सही। दिस इज दैट डोमेन विच वी कैन कार्ड, जिस तरह के देना कि जिंदगी के हर एक शोबे में जो है और डिसिप्लिन जो है जरूरी है, तो इस तरह ये भी है कि हर एक लर्निंग एक्टिविटी, चाहे वो कॉग्निटिव एक्टिविटी हो, चाहे वो साइकोमोटर एक्टिविटी हो, उसमें जो है ये इफेक्टिव डोमेन का होना जरूरी है। इसमें जो है स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल when they are entering into a demonstration room or when they are entering the classroom for the that particular demonstration or the for that attending a PowerPoint presentation from the teacher respectively, दोनों सूरतों में उनकी जो है अपनी कुछ रूल्स रेगुलेशन है। उन रूल्स रेगुलेशन और उन चीजों पर अमल करना, दिस इज एक्चुअली द इफेक्टिव डोमेन। Up student, if he is talking with the teacher, he is talking with his colleague, he is talking with the other friends which are senior, which are junior, तो इन सब में उनकी एक वैल्यू सिस्टम होती है। यानी जिस तरह घर में आप अपने अबू से बात करते हैं, तो उसकी आपकी एक अदर से एक टोन लहजा होती है, अदर से एक इमोशंस होते हैं, आपके एक फीलिंग्स होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं। बट इफ उसके बरक्स अगर आप जो है बड़े भाई से बात करते हैं या अपने कजन से बात करते हैं, फिर छोटे भाई से बात करते हैं, तो हर एक के साथ हमारी जो है वो डीलिंग डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ द that situation, that how we can deal. So this is actually the effective domain, and this is the simplest one, is that simple ki the student should have be aware of the that situation, how we have to react to the that situation. So receiving and attending, that simple mean willing to be aware of the sitting situation, that give attention by choice, open to the experience. The next is responding. इसका मतलब ये है कि रिसीविंग में जिस तरह वो सिर्फ आराम से बैठेगा और वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा और वो सिर्फ जो वहां पर जो है एक अटेंशन दे देगा। अब वहां पर रिस्पॉन्डिंग ये है कि एक अखलाक के दायरे के अंदर से
वो प्रैक्टिकली वहां पर अपनी पार्टिसिपेशन जो है करेगा. दैट माइट बी आस्किंग अ क्वेश्चन, दैट माइट बी सम opinion to a question, that may be some objection on a statement, so there will be responding. So for example, that will, and again that will be willingly, um, that the students will respond. So the next domain, subdomain in this affective domain, this the willingly participating obedient volunteers find satisfaction and the participating and ready to respond. जो थर्ड सब डोमेन में उसमें ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो वैल्यू सिस्टम को जान लेता है और उसको पता होनी चाहिए कि ये टीचर है और ये जो इससे किस तरह हमें बात करनी चाहिए, एंड दिस इज आवर कुलीग, हमारी क्लास फेलो है, इनसे किस तरह जो है हम बात कर सकते हैं. तो ये है कि उन्होंने हर एक से एक अलग अंदाज से बात करें, एंड दिस इज एक्चुअली द वैल्यू कि उसको वैल्यू सिस्टम का जो है वो पता होनी चाहिए. सो ही इट मीन कि मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट, chooses to behave in a certain way, frequently begin to identify with their behavior and commit to it. The next is organizing, जिसमें ओ at the same time जो है different जो values है उसको combine करके इंटीग्रेट करके और फिर इसको सीक्वेंस में डाल के उसकी क्या करता है, उसकी प्रायोरिटाइजेशन करता है कि कौन सी से पहले बात करनी है, कौन सी को सिचुएशन जो है किस तरह डील करना है, विच वन इज द टू बी प्रायोरिटाइज एंड द अदर वन. सो ये जो प्रायोरिटाइजेशन है अब वैल्यूज, ये उस लेवल में आ जाती है, ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती हैं कि इसमें जितनी भी वैल्यूज होती हैं दे ऑल बिकम इन अ सीक्वेंस, दे ऑल बिकम organized, they become systematic way. So the values become systematic and can compare and contrast values and choices, begins to order and prioritize the values, chooses to commit to certain values and behaviors. The last component, that is the characterizing. It mean कि जिस तरह की अगर एक स्टूडेंट है वो इन चारों को कवर कर लेता है तो फिर एक हम कहते हैं कि ये अच्छा स्टूडेंट है, ये एक ओबीडियंट स्टूडेंट है, ये एक शरारती स्टूडेंट है. तो ये सारे विकास उनकी एक करेक्टर बन जाती हैं. उनकी ये वो कंसिस्टेंट जो है, कंसिस्टेंटली वो उसकी बिहेव अच्छी होती है, कंसिस्टेंटली उसकी बिहेव बुरी होती है, कंसिस्टेंटली ही डोंट नो कि किस तरह एक स्टूडेंट से बात करनी है और किस तरह एक टीचर से बात करनी है. कंसिस्टेंटली जो है वो इस वैल्यू को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता कि अगर एक टीचर क्वेश्चन कर रहा है उधर से स्टूडेंट पे क्वेश्चन कर रहा है, वी हैव टू रिस्पॉन्स टू विच वन अर्लियर. हमने स्टूडेंट अपनी कलीग जो सामने बैठा उसके बात को सुनना है कि टीचर के बात को सुनना है. सो ये जो तरतीब से उसको ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक दिस ऑर्गेनाइजिंग, और फिर अगर ये बार बार इस तरह करते तो फिर उसकी करेक्टराइजेशन या करेक्टर्स बन जाती है, उसकी एक शनाख्त बन जाती है. सो करेक्टराइजिंग मीन act consistently due to and the internal belief, can articulate a philosophy, a worldview, can break down complex situation and respond accordingly based on the values developed and allowed by a code of personal behavior. और ये जो पर्सनल बिहेवियर है ये जो है उसकी बन जाती है आदत. अब हम किस तरह इस पर काम कर सकते हैं. Being a teacher, it is our responsibility कि we should have not only to हम उसको सिखाए कि ये cognitive, सपोज हम पहले जो हमने डिस्कस किया था स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, तो सिर्फ ये नहीं है कि हमने स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस जो है किस तरह कर क्या है ये चीज, इसको किस तरह असेस करते हैं, क्या क्या कौन कौन से टेस्ट हैं जिसके नाम कर सकते हैं, या पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन पे हम ये सिखा सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट असेसमेंट टूल व्हिच वी कैन यूज एंड हाउ टू यूज देम, what are the different special tests in the objective examination which we can use for the spondylolisthesis. हम उस पेशेंट्स में किस तरह जो है उससे बात कर सकते हैं. तो ये जो इफेक्टिव ट्वेरी क्या है फिर कि व्हेन वी आर डीलिंग विद द पेशेंट, हमने उनसे हर एक, अगर उनसे हमने उसके बैक को एक्सपोज करना है कि हम इंस्पेक्शन करें कि वहां पर जो है सेल साइन तो है नहीं, विच इज एक्चुअली अ पॉजिटिव साइन फॉर द स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, एल शेप साइन जो होता है बैक भी. अब इफेक्टिव ट्वेरिंग क्या है कि द स्टूडेंट शुड बी टॉट कि पहले आपने उनसे कंसर्न लेनी है कि ये जो मैं आपको आपकी बैग को एक्सपोज करना चाहता हूँ तो क्या आप इजाजत देते हैं.
अब ये न कॉग्निटिव डोमेन है न ये साइकोमोटर डोमेन है। ये वाली बात जो अब ये कर रहा है ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द अफेक्टिव डोमेन। या फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप एक मॉडल पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसको आप डिफरेंट एक एक कंपोनेंट आप उठाते हैं और जो तरतीब से पड़ी हुई है उसको आप एक एक से डिस्कस करते हैं, और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद क्या आप उन जो मॉडल्स जो इसमें आपने कंपोनेंट कंपोनेंट किया है, क्या आप उसको दोबारा उस सीक्वेंस से रख देते हैं कि नहीं, क्या आप उसको दोबारा से जो है इंटीग्रेट कंबाइन करके वो मॉडल बना लेते हैं कि नहीं। दिस इज एक्चुअली द effective domain. Yeah, for example, you have to be enter the class with proper uniform. आपकी यूनिफॉर्म जो है वो सही होनी चाहिए। आपकी अगर आप प्रैक्टिकल लैब या डेमोन्स्ट्रेशन रूम में आ रहे हैं, सो यू शुड हैव योर लैब कोट। अब लैब कोट का न होना, दिस इज एक्चुअली ये इट मीन दैट डोंट हैव द रिसीविंग, पहला कंप्लेंट उनका नहीं है कि भाई दैट दे आर नॉट अवेयर देयर अबाउट द सिचुएशन कि किस तरह क्या करना है। तो ये चीजें जो है हमने उनकी जो अखलाकी ग्रूमिंग जो है, हम उनकी जो ये मैनर्स है उन पर भी काम करना चाहिए। वी हैव टू कीप देम अवेयर कि भाई आप व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रोसीजर व्हाट इज द करेक्ट वे एंड हाउ टू डील देम, व्हाट आर द डिफरेंट इमोशंस एंड वैल्यूज एंड हाउ टू डील विद देम। तो ये भी हम उस पर हमें काम करना चाहिए, तब जाके जो है वी विल हैव वी आर वेरी गुड टीचर। So these are some five subdomains of the affective domain, which is receiving or attending, and then the responding, waiting, organizing, and the characterizing. There another slide which are describing this in some similar way. That is to receive mean to it mean कि आप जो है just observe कर रहे हैं, जिसे हमने पहले कहा कि यहाँ पर जो है you have to just to be aware of the situation, you are sitting there and just going to observe there, सिर्फ observe कर रहे हैं। सब बाकी से आप रिसीव करें कि बाकी क्या कर रहे हैं और आप उन चीज को जो है। एंड द सेकंड वन विच इज एक्चुअली द रिस्पॉन्डिंग, दैट इज एक्चुअली कि आप वहां पर खुद पार्टिसिपेट करते हैं, कि दूसरों को देखते हुए आप खुद वहां पर एज अ पार्टिसिपेट करते हैं, बट दैट पार्टिसिपेशन इज respectfully, that is responsibly, and that is actually in a very appropriate way. दूसरी बात, सपोज एक क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन जो है, दिस इज द राइट ऑफ द स्टूडेंट। अब ये एक इफेक्टिव डोमेन है कि आप रिलेवेंट क्वेश्चन करें, टू द पॉइंट क्वेश्चन करें, और ऐसा क्वेश्चन करें कि वाकई आपको उसकी समझ नहीं है। बात स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो टीचर्स को टारगेट करने के लिए, एज अ फन के लिए इररिलेवेंट क्वेश्चन, अननेसेसरी क्वेश्चन, जिनके कोई वेटेज वो क्वेश्चन कर लेते हैं। अगेन दिस रिस्पॉन्डिंग, ये जो रिस्पॉन्स दे रहा है, जो टू पार्टिसिपेशन कर रहा है, इसकी अगर इफेक्टिव डोमेन पर देखा जाए तो इट इज not the appropriate to the context way, it is not a respectful way to ask a question. So asking a question, he is something else, but how he is asking the question and what he is asking, that depends that what he have learned. So this is actually the effective domain. Value means ability to associate personal and collective values with the contextual experience and express value judgment, जहाँ पर वो इसको फर्क कर सकेगा कि जो पर्सनल वैल्यूज क्या है, कलेक्टिव वैल्यूज क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द टॉकिंग टू ए टीचर as well in the talking to a colleague, talking to a peer, how we can deal with senior, how we can talk with the junior, या एक बड़े से अपनी उम्र से जो हमारे बड़े होते उनसे किस तरह बात करते हैं, छोटे से किस तरह बात करते हैं। वी हैव द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज वैल्यूज एंड वी आर एबल टू कोप आवरसेल्फ विद सच डिफरेंट सिचुएशन। ऑर्गेनाइज मीन कि हम यहाँ पर क्या करें, व्हेन यू एंटर इनटू द क्लासरूम द स्टूडेंट शुड हैव टू ऑर्गेनाइज कि भाई किस तरह जो है पहले किससे बात करना है, किसी को प्रायोरिटाइज करना है, किससे किसको इग्नोर करना है, किसको आंसर देना है, किस तरह, ये सारी चीजें जो है दैट डिपेंड व्हेन दे अंडरस्टैंड, व्हेन दे हैव ऑर्गेनाइज ऑल द वैल्यूज एंड देन दे टॉप पर किसको रखते हैं एंड नीचे किसको रखते हैं, तो ये पे उन पर डिपेंड करता है। और उनकी जो if they have the proper and perfect valuing, उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग है, जो हमने आगे प्रीवियस डिस्कस किया कि जो एबिलिटी टू एसोसिएट पर्सनल एंड कलेक्टिव वैल्यूज,
इसमें अगर वो सही तरीके से जान जाते कि यस इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, यानी उसको फिर ऑर्गेनाइजिंग उस लेवल पर कर लेता है जब उसको उसके फर्क मालूम होता है, तो फिर एक्चुअली ही विल हैव टू रिस्पॉन्स देम इनिशियली and will ignore the others. So this is the ability to structure, prioritize, and the reconcile personal and others' value system. Internalize we can simple mean कि उसकी characterization जो है capability to articulate one own values and belief system and operate consistently within them, और ये उसकी एक character बन जो उसकी एक पहचान बन जाती है. So these were the 5 subdomains of the Bloom's affective domains. अब इसमें जो है हम we can divide them into three, concise into three subdomain. This is the A1, which means notices and feel for the patient. This is actually the receptivity. A2 is feel and act somewhat. अब उनके साथ जो है सिर्फ अपने internal feeling नहीं है बल्कि आप उनके साथ communicate suppose करें. That is actually acting on somewhat. This is actually the response. Feels and act with the understanding of the value system. कि आपने एक पेशेंट को किस तरह जो है डील करना है और पेशेंट के अटेंडेंट के साथ किस तरह बात करना है, तो ये जो है एक्चुअली एक वैल्यू सिस्टम है. और घर में आप जैसा कि अम्मी अब्बू से बात करते हैं, फिर अपने कजन से, फिर अपने बड़े भाई से, तो इन तीनों में यू हैव टू डिफरेंशिएट व्हेन यू आर टॉकिंग. दिस इज एक्चुअली द वैल्यू सिस्टम कि हमने किसको ज्यादा वैल्यू देनी है, किसको कम वैल्यू देनी है, किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है. दिस इज एक्चुअली द फील एंड एक्ट विद अंडरस्टैंडिंग of the value system, that actually then the internalization or the characterization, which is the A1, A2, and the A3. These are the action verbs. We can say that the key verbs are the key words which can be used for the using and constructing the learning objectives of these different subdomain of the Bloom's affective domain. For example, for the receiving, we can use the different word like the acknowledge, ask, attentive, follow, given, listen, understand, attend, recognize. Responding, that is actually some participation related होते हैं. So the action verb should be like answer to a question, assist someone, giving aid, compilation, conform to the rules and regulation, and to discuss, greet, help, label, perform, present, and tell. So all these are just those responsibly and respectfully participation in some situation. This is actually responding. Value, that is actually then actually understanding the value system, as well as there is the way of talking to different ones and how we tracking them. That is the way. So different words can used for as action verb for constructing the learning objectives for the varying subdomain like appreciate, cherish, treasure, demonstrate, initiate, invite, believe, join, justify, propose, and respect. देन थोड़ा सा हम हायर लेवल पर चले जाते हैं और फिर वहां पर हम डिफरेंट वैल्यू सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर उसमें हम ये कंट्रास्ट और जो वहां पे सिमिलरिटी देखते हैं कि, और फिर एक सीक्वेंस उसको ऑर्गेनाइज करके सीक्वेंस दे देते हैं, और सीक्वेंस में इफ वी हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू सिस्टम, तो हम किसको टॉप पर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे. तो ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग है. डिफरेंट वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू construct learning objectives for the organizing like compare, relate, synthesize, systematize, clarify, and examine. Then the last, the higher level, which is the characterizing or the internalizing. Different words can be used like with the जो किसी की वो बन जाती हैं, character बन जाती हैं. Different action verb can be used like act, discriminate, display, influence, modify, perform, qualify, question, revise, solve, and verify. So these are some action verb which can be used for the different level of affective domain. This is the actually the ideal learning pathway, and usually when we are learning something cognitively and we are learning something practically, in both cases
the effective domain that is going parallel to them. And um, if we want our students to be good at learning, so that should be not at the basic level, and we are not expecting them to be at the top level. At least they should be at the above at the mid level, which is actually, this is that ideal pathway, which is actually when they are complex word response, it means they are expert at that opinion. And if we look at the graph, that is a straight way, that having at the same time he will receiving, perception, recall, comprehension, and guided response, responding. So we have to take all these domains in a similar time when we are discussing the cognitive domain, and the other time when we are discussing the practical skill. In both cases, the affective domain should be in parallel with the both the cognitive taxonomy as well as the psychomotor taxonomy. So now we will come towards our last objective, which is the principle of learning objectives. And every learning objectives that start from a blanket statement. What we mean by the blanket statement, that will be discussed in the upcoming slide. Then every objective that should have a very clear target audience in mind. Like if you are a teacher and you are going to demonstrate uh, a physical test, you are demonstrate the examination of the abdomen and to the third year students. These, you should be very clear that to whom I will demonstrate this demonstration. All these learning objectives, they should start with action verb, they should start with the keyword, and we have discussed the keywords for all the domains. If they are the cognitive domain, if they were the psychomotor domain, and if they were the the different level of the affective domain, so we can use those action verbs. And these action, why they are known as action verb, because all these action verbs, they are measurable and they are achievable, and they are very specific in their meaning. Uh, in the next slides, we will discuss that we shouldn't use such verbs which are unmeasurable and which can have understanding at different level for different people. Like if you look at the world to understand, everyone will have different level of that understanding. So we don't have a terminal point that this is the this objective has been achieved, because the definition of understanding is different for different people, and hence it can't be used as an action verb. Keep the objective comprehensive and sufficiently global and not restrictive. What does it mean? It means we should have to be very open, and the objective that shouldn't have a wide range of the learning capacity. They shouldn't be restricted. So the blanket statement is what are the different components? We can say what is the anatomy of the objective. That is the blanket statement. It means at the end of, ये हम लिख देते, पहला हम क्या लिखेंगे, ये at the end of, यहाँ end of से मतलब ये कि कोई सेशन हो रही है, कोई कोर्स हो रही है, कोई सर्टिफिकेट्स हो रही है, कोई ईयर हो रही है, क्लास हो रही है, मॉड्यूल हो रहा है, या इस तरह कोई भी जो सेशन हो रहा है. So the end of session, at the end of this course, at the end of this class, at the end of this lecture, the learner. अब learner जो है, ये आप learner word use कर सकते हैं, लेकिन इसके बजाय आप अगर आप specific student लेके, जैसे for example at the end of this lecture, the students of the second semester DPT, the student of second semester BS nursing, or the student of second year of MBBS or BDS, will be, shall be, or should be, जो भी आप इसको use करें, that is okay. And able to, up to जो है, that should be always written in front of every action word. यहाँ से able to, it means कि his or her ability, जो हम at the end of this session चाहते हैं कि ये student जो है क्या हासिल कर सकेंगे. So end में हम कहते हैं कि now use measurable action verb to. Suppose ये हर एक के साथ होगा कि भाई at the end of this lecture, the students of the
सेकंड सेमेस्टर बीएस नर्सिंग विल बी एबल टू, अब नीचे हम क्या करेंगे, स्टार्ट विद द एक्शन वर्ब और फिर वो पूरा स्टेटमेंट हम अपना लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल कर लेते हैं, दीज आर द एक्शन वर्ब फॉर द कॉग्निटिव। C1 के लिए डिफाइन, मेमोराइज, लिस्ट, रिकॉल, रिपीट, रिलेट, नेम एंड मेमोराइज। C2 जो सेकंड है सब लेवल ऑफ द कॉग्निशन, this is the restate, discuss, describe, identify, locate, report, explain, express, recognize, review and interpret. For the C3 they are translate, reply and up to the prepare. So these are the different action verb which can be used in the our blanket statement. uh, do not use any of these like know, understand, believe, have faith in, become familiar with, understand, enjoy, appreciate, beware of and learn. uh, क्यों यूज नहीं करनी चाहिए, हमने पहले भी ये अंडरस्टैंड की एग्जांपल डिस्कस की कि द स्टूडेंट्स वे एबल टू नो। अब नो जो है किसी की नॉलेज की लेवल जो है डिफरेंट होती है, इट मीन अचीवेबल ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव जो है ये अलग अलग है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन मेजरेबल, दैट इज नॉट एन एक्शन वर्ब। सही। सो इसलिए एग्जांपल्स ये है, क्या अगर हम इस तरह कुछ लेक्चर्स दे रहे हैं, सो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लाइक ये मुख्तलिफ जो है लेक्चर्स के लिए हैं, लेकिन वी हैव टू enumerate them in a list, like the end at the end of this session the learner will be able to enlist the anti-inflammatory drugs, enlist the different school of manual therapy। अब ये जो enlist है, अगर हम देखें दिस इज फ्रॉम द C1, यानी पहला जो है जहां पर हमने भी डिस्कस किया, अगर हम देखें यहाँ पर लिस्ट तो नहीं लेकिन लिस्ट मौजूद है, दिस इज एक्चुअली क्या है, दिस इज द C1। अब अगर आप एक्शन वर्ब को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये कौन से लेवल का है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन ए नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल ECG। अब ये C2 है, क्योंकि C1 में पहले इसको तो ये समझना होगा कि एक ना ECG होता क्या है, फिर एक नॉर्मल ECG क्या है, फिर जो है एब्नॉर्मलिटी कब होगी, और फिर ये जो डिफरेंशिएट है अगर हम चले जाए वहां पर उसमें देखें तो इसमें हमें मिल जाएगा रिस्टेट, डिस्कस, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, लोकेट, रिपोर्ट, एक्सप्लेन, एक्सप्रेस, रिकॉग्नाइज, रिव्यू, इंटरप्रेट। यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट तो नहीं है, लेकिन ये डिफरेंशिएट जो है हम यूज कर सकते हैं, फ्रॉम इंटरप्रेट ले सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं, एक्सप्लेन ले सकते हैं, आइडेंटिफाई भी इवन कर सकते हैं कि इसमें से एबनॉर्मल कौन है। तो ये डिफरेंट जो है हमारे उसमें C2 के जस्टिफाई इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ हाई ग्रेड फीवर इन एन यूनिट, दिस इज देन द C3 बिकॉज इसमें हाई ग्रेड फीवर इन यूनिट इज द स्पेसिफिक सिचुएशन, वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन कम करेंगे दैट विल बी ए न्यू केस, इट विल बी द C3। सो यहाँ पर जस्टिफाई तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये जो जस्टिफाई है दिस इज एन एक्शन वर्ब फॉर द C3। डिस्क्राइब द फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट प्लान फॉर द एक्यूट लो बैक पेन। अब इस ऑब्जेक्टिव का डिस्क्राइब जो है दिस इज C2 है, बिकॉज सबसे पहले वो लो बैक पेन क्या है ये उसकी C1 में ऑलरेडी हो चुका होगा, फिर उसके डिस्क्राइब जो है वो हम इसको यूटिलाइज कर सकते, इट इज इन द C2, देयर इज डिस्क्राइब इज इन द C2। सो ये हमारा हम अब पहला जो एक्शन वर्ब है इससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये कौन सी लेवल की है। हम जब लेक्चर बना रहे होते हैं सो हमारे लेक्चर्स में एक्चुअली ये अगर आप देखिए इसमें जो एग्जांपल्स दी हैं इसमें एट द सेम टाइम आप C1 भी दे सकते हैं, C2 भी दे सकते, C3 भी दे सकते, ये डिपेंड करते हैं कि आप जो है वहां पर किस लेवल का पढ़ा रहे हैं। तो ये अगर सिंपल आप डिफिनेशन की बात करें कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन। अब डिफाइन जो है जैसे अगर हम उसमें चले जाएं, हम अपनी हमारा जो स्टार्ट है उसमें हम बात कर ले, तो वहां पर ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्ट। अब ये डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, दिस इज जस्ट रिकॉल करना है, आपसे पूछना है कि जी आप बताएं व्हाट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव, या अगर आप नहीं टीचर्स बता रहा होते सो दिस इज एक्चुअली द C1। फिर हम नीचे आगे डिस्कस एंड डिस्कस एंड डिस्कस, तो ये जो ट्री है दीज आर दिन द C2 है।
अब कंस्ट्रक्ट जो है यूजुअली दिस इज एक्चुअली द C3, क्योंकि इसमें आप पहले जो है इसको समझने के बाद फिर आप खुद बना लेते हैं. सो दिस इज एक्चुअली दिस विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव लेवल. सो दिस इज एक्चुअली द C3. क्योंकि हम आपको लेक्चर अभी दे रहे हैं, सो प्रेजेंटेशन ऑलवेज कॉग्निटिव डोमेन है, इसमें हम प्रैक्टिकल जो है नहीं दिखा सकते, बिकॉज प्रैक्टिकली वी नीड demonstration. We have to use our muscles when we are using a physical activity, उसके लिए जरूरी है. तो इसलिए यहाँ पर जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन में जितनी भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब के सब कॉग्निटिव डोमेन के होते हैं. फिर वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच ऑब्जेक्टिव जो है ये कौन से लेवल का है, ये C1 का है, C2 का है, C3 का है. मोर स्पेसिफिकली अगर हम चले जाए तो देयर आर 6 डोमेन, C1, C2, C3, C4, C5, C6. लेकिन जो है हम शॉर्टली इसको जो है C1, C2, C3 पर कर सकते हैं. सो हम उधर चले जाएंगे अपनी उसमें कि जिसमें हम अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे थे. सो दैट वाज द that is the blanket statement. These are the examples जो हमें डिस्कस कर रहे थे different. And that is the picture when we are the student of CHP. We did the CHP in 2015. He was the vice chancellor of the Khyber Medical University, the great Hafizullah sir, and she is the Madam Brechna, which is now the director and as well as the associate professor there at the Institute of the Health Profession Education. ये हम 5 physical therapists थे. He is the only PhD in the public sector university and the first PhD in all Pakistan. And then जितनी भी हमारे साथ उस बैच में थी, they all were the PhD return scholars from the KMU की जितनी भी मुख्तलिफ बायोकेमिस्ट्री थी, वहाँ पर एनाटॉमी थी, इसमें जो फार्माकोलॉजी थी, फिजिकल थेरेपी थी, डेंटिस्ट्री थी, हेमेटोलॉजी थी, मुख्तलिफ उसमें की जो प्रोफेशंस थे, जो डिसिप्लिन्स थी, उसकी PhD स्कॉलरशिप पर किमी ने उनको भेजा था बाहर. और वो सब के सब जब रिटर्न हुए तो उनके लिए एक स्पेसिफिक बैच बनाया गया था. एंड वी वर द मेंबर of those batches, and I am this one who is inside that red circle. So this is a picture from the, और ये हमारा CHP सेशन चल रहा था. and sir enter into the session और उसने फिर अपनी कुछ मेडिकल एजुकेशन, उसकी CHP आई थिंक उसने नहीं भी किया, लेकिन उसकी मेडिकल एजुकेशन पर बहुत वास्ट एक्सपीरियंस थी और बहुत अच्छी उनकी एक स्पीच थी जो उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की. स्टिल वी रिमेंबर. So that was one of the picture memory from the that class of our CHP, and we were the batch 12. Thank you so much to all of you. That was all about the different domains of the Bloom taxonomy, cognitive domain, psychomotor domain, as well as the affective domain, and as well as we also discussed and how we can construct the learning objectives. Inshallah, in the next sessions, and the next day we will discuss in detail, much more detail about the construction of the learning objectives and the learning outcomes and किस तरह उसको बनाएंगे at a different level. Thank you so much to all of you.